Greetings, everyone. This is me, Zara Berserk. Guys, I'm going to talk about this. I'm not feeling well, so please forgive me. I get very emotional, enraged, so not prepared for this, but I just have to vent out things. I won't be able to do much justice to this. It's just the beginning now, since the Supreme Court opinion on Zulfiqar, Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto's case. So I've looked at the videos, whatever I could find on when Kasuri came to the witness box recently. And very interesting thing was to notice when the judge said, why didn't they get you alone? And so why when, that could be the really, really terrible people. How terrible. So anyways, just Supreme Court, Chief Justice saying to Kasuri, now I'm sorry, I just can't remember the names, father's name and his, the one who was murdered, Nawab Kasuri, and I think this one is Ahmed Kasuri. So please, yeah, this is how I am. Please overlook this. So I'll just take the last name, Kasuri. I was 11 years old when I was very much, impressed by Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto when he used to come to Nishta Park and make speeches and all this. So we were friends with PPP, my father's sister and my mother. So darkest day when martial law came and we couldn't speak. My father told me, I remember we were at Tariq Road now. We used to go to Tariq Road instead of sometimes PIDC for Pan. So now we're at Tariq Road, the Pan shop outside, and in the car, my father told me we're not supposed to say, don't say a word, right? We're not supposed to say anything. Martial law and they'll कोरे मारेंगे अगर हम कुछ भी बोलेंगे कोरे मारते हैं they give you these stick it's not lashes I think it's strikes kore what are they called in English so this okay when Bhutto was hanged my mother's cousin came to Karachi American School. I threw my ice cream cone that I was eating in the canteen, snack bar, we called it, swimming pool area of Karachi American School. So I had to leave school and in the middle or like that. Of course, my mother went mad. She went outside. She didn't care, and because she lost her mind, very emotional. That I heard that my mother went out in the nighttime. I don't know where I was, but I heard from someone. And she was saying, Bhutto, Zulfiqar Ali Bhutto, Kumar Dalai, or what. That's what I was doing. Not much. But I was like, when I came back from school, like, I've betrayed Zulfiqar Ali Bhutto. I should have tried hard. दाल रोटी खाएंगे भुट्टो को लाएंगे दाल रोटी खाएंगे
तो अभी आप सैयद मुज़म्मिल का भी वो सुन सकते हैं, बहुत अच्छा है, द डार्केस्ट डे, और व्हाट इज इट, I'll give you the exact. I've watched many videos on this कसूरी, और ये मुझे तो लगता है कि इन्होंने ही अपने फादर को मरवाया। भुट्टो क्या, पता नहीं, अभी आपकी राय इधर जाएगी, जैसे हमें सुप्रीम कोर्ट की अभी राय मिली है कि भुट्टो शहीद लेकिन हमेशा जिंदा है, हमारे लिए शहीद है, और शहीद तो जिंदा ही होते हैं। शहीद की जो मौत है वो मौत की हयात है। 44 years के बाद तो हमने अपनी मदर्स कजन, आई टोल्ड हर दैट कांट वी protest somewhere, just stand there, hold vigils or something. She said, no, we can't do anything. And I should have done something more, but I didn't. And we were shut up like anything, couldn't talk, my father told me. So 5th July, Zia's martial law, darkest day in Pakistan's history. Sayyid Muzammil official channel on YouTube. You can watch this. So Pakistan was completely destroyed the day this happened. Ziaul Haq Khan, sorry, excuse me, but that's just my child, whatever was told, we call him Khan Dajjal, traitor of Pakistan. He took money, Sayyid Muzammil का अगर आप देखें ना ये वीडियो, तो कहते हैं कि USA का कोई offered him money, and then he said, oh, that's peanuts for me, and then they offered him more, and then बेचारे का पेट भर आया, बेचारा, फिर भी हम कहते हैं because बेचारा क्यों कहते हैं एक ट्रेटर को, इसलिए पेट भरा है जो इतना फिर खुद भी गिरा है हाइट से। लेकिन एक ये पूरे पाकिस्तान जो हमारा प्रोग्रेस ये सब खत्म कर दिया। भुट्टो जो वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के लिए और करता था, गरीबों का और देहाती स्पीकर था, उसको मार डाला, प्रोग्रेस खत्म कर दिया, बिल्कुल लेम कर दिया, पाकिस्तान के हाथ पांव तोड़ दिए। So I was watching the Supreme Court when Kasuri comes in the witness box. तो हाँ, ये बहुत अच्छा, लाइक कोर्ट ने पूछा, तो ये सब अगर मैं अपने प्राइवेट लाइब्रेरी में जाऊँ बताने, सॉरी, नो कॉपीराइट्स इन्फ्रिंजमेंट इंटेंडेड, आपको दिखाऊं, तो ये सब मैंने वीडियोस अर्लियर ऑन देखे हैं। ये आप सैयद मुज़म्मिल ऑफिशियल का नो कॉपीराइट्स इन्फ्रिंजमेंट इंटेंडेड मैं प्ले नहीं करूँगी बिकॉज आई हैवंट आस्क्ड हिम फॉर परमिशन एंड आई डोंट नो, आई हैवंट चेक्ड कि उधर कॉपीराइट्स हैं या क्या, इफ आई कैन प्ले दिस, एनीवेज आई हैवंट आस्क्ड हिम, सो ethically not right, and as long as थोड़ा सा I will lose my mind here, इमोशनल तो होना ही है। मेरे फादर कहते थे कि भुट्टो को फांसी मिली, वो इमोशनल था, नहीं मैं ये बिलीव नहीं करती, और तुम भी इमोशनल हो तो हाँ, आई हैव थॉट अबाउट दिस कि जो भी इमोशनल होते हैं ना वो फेलियर्स होते हैं, दिल के छालों का
जख्मों का कौन देखता है दिल। तो जख्म है बहुत, दिल तो पाश पाश हो गया है इन पीसेस। बस ये जब मार्शल लॉ आया ना, व्हेन इट केम 5 जुलाई, पाकिस्तान पूरी ख़त्म हो गई। दिस इज द स्टार्ट ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन। ट्रेटर्स, मैंने इधर गद्दार लिखे ना, तो कैसे गद्दार हैं। अच्छा, जब कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट ने जब कसूरी को पूछा ना, और ये मैं देखती रही हूँ ना, मैंने खाना खा थोड़ा सा खाना थोड़ा सा खाया है, दाल नहीं था, फ्राइड, तो वो जो कैंड फूड है थोड़ा डाल के, जैसे चिकपीस खाए। चिप्स भी अभी ख़त्म हो गए हैं। तो ये है मोहम्मद अहमद खान कसूरी मर्डर की स्टोरी। हु प्लान्ड एंड हु वाज विक्टिम? भुट्टो इन्वॉल्व्ड, ये भुट्टो इन्वॉल्व। तो ये है कि बहुत सारे मैंने देखे हैं इधर, मुझे और नहीं मिले। अहमद रजा कसूरी के, लाइक ओके द कसूरी ही दिस पर्सन ऑन द लेफ्ट, के जब भी वो विटनेस बॉक्स, जितने भी मुझे वीडियोस मिले, मैं देख रही थी। एक वीडियो में कहते हैं वो तो ऑड मैन, ही कम्स अप एंड ऑल दिस, आई डोंट नो। तो कोई कह रहा है मे बी द जज इज वन ऑफ द, गॉड नोस हु आर द, one sitting there in the court. What an odd man. तो एक क्वेश्चन पूछता है चीफ जस्टिस, कहते हैं ना, ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज, इफ आई से जज प्लीज फॉरगिव मी। तो चीफ जस्टिस एक क्वेश्चन पूछता है कसूरी से कि क्यों, लाइक वो तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, तो शहीद भुट्टो तो जानते थे इनको, इनके वेयर अबाउट्स, अगर स्पाई इनके पास ऐसी सीक्रेट सर्विस थी। जो सैयद मुजम्मल ने भी एक वीडियो, वो मैं नहीं देख रही हूँ, कि भुट्टो साहब के पास एक ही हैड सीक्रेट सर्विस। तो बराबर उनको करना चाहिए ना, देखना चाहिए कि जब अकेले हैं ये वाले कसूरी, उनके फादर फैमिली के साथ क्यों, पूरी फैमिली को मरवाना चाहते थे क्या? तो बहुत 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 गंदे लोग होंगे ना। हाँ, और इतने गंदे लोग, इतना गंदा, इतने गंदे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब शहीद, हाँ, कि पूरी फैमिली को मारना चाह रहे थे, ख़त्म करना चाह रहे थे। तो वो रिकॉर्ड में किसी और फैमिली को भी ख़त्म किया है जुल्फिकार अली भुट्टो ने? जुल्फिकार अली भुट्टो का कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि किसी के साथ, किसी और के साथ भी दुश्मनी थी और उसकी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया? तो मुझे लगता है कि केस अभी तक लाइक सही तरह नहीं हुआ है। कसूरी को मुझे तो कसूरी पे, स्ट्रेटर पे, जिसने भुट्टो को ये अपने ईगो और ये ना वायर, अमेरिका ने तो करवाया था, लेकिन अभी आप लोग क्यों, लाइक देखें, एक होती है ना इंसान, एक सेक्रीफाइस होती है। अमेरिका से अगर ज़ियालक, अगर ये देखें ना आप, ज़ियालक अगर अमेरिका से वो नहीं लेता पब्लिक सेफ्टी अलर्ट, वेदर कंडीशन, ओह वी हैव सम वेदर कंडीशंस, या पुलिस से ये नोटिफिकेशन आती है मोबाइल पे। तो
ये सब खा पी के पाकिस्तान को खत्म कर दिया इन लोगों ने, अपने झूठ, अपने मकारी, अपनी बिट्रेयर्स, ट्रेटरशिप। तो मुझे तो ऐसा लगा कि कसूरी ने करवाया है भुट्टो का। अगर वो जो कहते हैं, और वो तो सैयद मुजम्मिल को मैं बहुत, like I trust him to give us some unbiased explanation and all this, right? He's a miracle now given to us. May God keep him safe. I've told him in the comment section, finally, I said, no, I have to put the, okay, please leave Pakistan, go to Dubai. Go to Dubai, please. ऐसे ना, तो वो एक FS क्या है, वो मैंने अभी वीडियो नहीं देखा, सैयद मुजम्मिल का ऑन भुट्टो सीक्रेट सर्विस या क्या है। तो ये मुझे तो, मैंने ये जो वीडियोस देखे ना, तो सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेज आस्क कसूरी दिस वन जूनियर कि अकेले में why didn't they get you alone, right? If they had to get you तो कुछ ऐसा वो तो होना नहीं चाहिए, जैसे when they had to get Murtaza, Shaheed Murtaza Bhutto, they got him. तो भुट्टो तो आई मीन उनकी क्या सीक्रेट एजेंट होगी ना, कितनी प्रेसाद, कितनी वो होगी, well trained, should be well trained. They cannot afford to miss the guy they wanted, right? बहुत अहम सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। और अगर ऐसा होता FIR का, और ये तो एक दफा टारगेट मिस किया है, दूसरी दफा तो मिस नहीं करो, तीसरी दफा भी मिस करेंगे, चौथी दफा व्हाट अ मिरेकल कसूरी, फॉर कसूरी व्हाट अ मिरेकल। अरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ में बेचारे इनोसेंट थे जो बोलते थे हमें मार्शल लॉ, ये रेफरेंडम क्या, उनको जिनको जेल में बंद करते थे, जिनको कोरे मारते थे, जनरल काना दज्जाल जियाउल हक, उन बेचारे गरीबों को कहां मिरेकल मिला है इन पाकिस्तान। तो कसूरी इतना नेक इंसान था, फादर, फिर फादर नहीं था कि फादर को लगी है गोली, सॉरी टू पुट इट दिस वे, बट आर यू सॉरी? No, you are not sorry for what you have done to Bhutto and his family that you owed. ठीक है, वो आपकी इंसल्ट कर देता था या आपके अगेंस्ट हो गया था, ये मैं कुछ पाकिस्तानी जो जब रिवेंज पे आते हैं ना, देखिए अभी सनम बीबी, सनम मैडम भुट्टो की, शहीद भुट्टो की डॉटर, उनका मैं देख रही थी, और उन्होंने कहा नहीं सब प्रोपेगेंडा। मेरे फादर ने, उनसे तो मैंने सुना कि वो तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर ने कहा कोई रिवेंज नहीं लेना है, go study abroad, come back and help your people of Pakistan. और मुझे उनका स्टेटमेंट तो बड़ा जेन्युइन लगा, बड़ा वो लगा, जेन्युइन स्टेटमेंट। पूरी फैमिली को मार डाला, तबाह कर दिया। सिर्फ थैंक गॉड हाउ सनम
Madam Bhutto, Sanam Bhutto has survived. शाहनवाज को पॉइजन दे दिया, उनको शूट किया, क्या गोलियों से छली किया, मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद का चाहिए टेररिस्ट करार किया। टेररिस्ट भी अगर विकिपीडिया में देखें, आसिफ जरदारी के ऊपर डाल दिया। Asif Zardari's mother knew my mother. So she once, I remember in year 2000, my uncle, she met my uncle, my mother's brother, and she said, how's your sister Nusrat? So the elderly ladies used to, like a little bit elderly, Asif Zardari's mother, liked my mother. They liked to speak to my mother, and my mother was like this, right? She was very good. ब्यूटीफुल सोल। और जैसे ना कि कोई घायल वायल नहीं, जैसे मैडम सनम भुट्टो ने कहा कि उनकी मदर ग्रामी में कोई घायल नहीं, नुसरत भुट्टो बेगम, कोई घायल नहीं था, वो जो थी वो सामने थी, कोई हम बना बना के नहीं बोल सकते। और थैंक गॉड दिस माय मदर आल्सो हैड, एंड आई गॉट इट फ्रॉम माय मदर, थैंक गॉड। सो आई वाज लकी इन दैट वे। ठीक है, अभी पागल कर दिया है, गुस्सा आता है, ये वो, लेकिन आज थोड़ा तो मैं कर सकूं जो 11 years में, when I was 11 years old I couldn't do. No, this is 44 years. तो ये तो जुडिशरी करप्ट थी उस टाइम पे, और जब तक मार्शल लॉ और ज़िया-उल-हक का हुक्म चलता था पाकिस्तान में, एंड परवेज मुशर्रफ कैन नॉट बी held on high treason. ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल गलत verdict दिया है against late परवेज मुशर्रफ। इस तो ये अभी रिसेंट जो ओपिनियन आया, इसको क्या कहते हैं, डिसीजन वाज मेड, वर्डिक्ट, तो कोर्ट तो completely corrupted, it's terribly vile, disgusting, right? So it's like we've, okay, they're saying we need to correct, so to go on, before we go on with, we need to correct ourselves, correct yourselves, but the Supreme Court, correct yourselves, but this is a crime against Zulfiqar Ali Bhutto. This is a murder against the judiciary of Pakistan. This was a murder against, also, the judiciary should be held responsible, liable for this, and should be punished. करप्शन हेड टू टो आ गया था। जजेस, मुझे अभी मुझे केसेस नहीं पता है, लेकिन पाकिस्तान, कराची में आई हर्ड, आई एम नॉट श्योर, वो ब्राइब्स लेते थे कितनों के, पता है, एक पता नहीं बच्चे का, माय अंकल टोल्ड मी व्हेन ही केम टू माय once with his wife and all, that टीवी पे वो केस देख रहे थे, एक बच्ची को रेप, क्या क्या क्या, बेबी, नो बेबी नहीं थी, बच्ची थी, कितने साल की थी, आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स ओल्ड, so the her rapist was acquitted, and on grounds that really it's messed up judiciary. No, it's not a messed up, it's a corrupted judiciary of Pakistan. रेप केसेस हो तो अब सैयद मुजम्मिल साहब सुने, इट इज वेरी आर्टिकल, रेप केसेस हो तो क्या होता है, इस हुदूद ऑर्डिनेंस के मुताबिक पाकिस्तान में, क्या वो औरतें लूटा है ऐसा?
No, but I can't talk about it. So sorry. Thank you, Sayyid Muzammil. I should call him Dr. Muzammil. Dr. Sayyid Muzammil. रेप केसेस ऑर्डिनेंस हदूद के ऑर्डिनेंस में क्या होता है और जुडिशरी I don't understand how the Supreme Court, sorry, I don't understand, I don't get it, how the Supreme Court could make a verdict against Pervez Musharraf for high treason and not their own courts and their own judges and not the Chief Justice of that time. Why Pervez Musharraf had to take such a step at that time, even. Not only at Bhutto's trial, the judiciary, high treason against the people of Pakistan and Pakistan. Judiciary's high treason. Ziaul Haq, the army's high treason. Ziaul Haq literally sold Pakistan to the USA by being accepting the bribe by the United States of America. Right? और कसूरी ने ठीक है डक किया ये आप एक एक बराबर केस देखें अहमद रजा खान कसूरी called Iftikhar Ahmad Fitna in court. So anyways, it seemed like this Kasuri guy is a traitor and he put the blame, false accusation on Bhutto, Shaheed Bhutto. And I think he was prepared for this, that they're coming that night for him. Seems like he got his father killed. Using the Secret Service of Bhutto. He also had a lot of influence, right? A lot of power. That's what the Supreme Court shows us when they say, "What? Okay, you have so many brothers, siblings, and one is in the army and another, in the parliament." And so he had lots of power, and he was close to Bhutto, a traitor. केज में लाया है केज में पता नहीं Zulfiqar Ali Bhutto was made to sit in a cage during the proceedings of his trial in Lahore High Court. The judge questions whether the High Court of Lahore was a trial court, and so you have answered here in this video, Qanun Dan channel. You can watch this video also. Qanun Dan channel's video on Zulfiqar Ali Bhutto was made to sit in a cage. And there's a record of this. How he was humiliated and all this. Shut up, traitors. Yeah, so it seemed like, I don't know, I'm not sure of course, but why wouldn't the court go further and investigate? मुझे तो लगता है कि बस ये opinion आया कि decision of the case that the trial of Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto was unfair. इतना vile, इतना corrupted judiciary उस time की with the Ziaul Haq.
और ये पॉलिटिशियन नवाज शरीफ एक्स प्राइम मिनिस्टर कहता है कि भुट्टो गद्दार था, शहीद नहीं था. And I think the video a little bit cutting the interview of Sanam Bhutto here, very good. First time I've seen such a up close and personal. It's really good that she came on this interview for this interview. So it's such a I love to see. My God, it was so wonderful. This Daur TV channel on YouTube, 43rd death anniversary of former PM Shaheed Zulfiqar Ali Bhutto, Sanam Bhutto, Benazir Nusrat, Shaheed Bhutto, Shaheeds. तो ये एक इंटरव्यू पूरा आप देख सकते हैं. Actually, I was trying to, whenever I try to go to this ex-Muslim from Pakistan channel now to check how Haima is doing. She's in the hospital and the last time we were told in a serious condition. So that's why these videos and live streams came out. So Yasmin Muhammad, very, very great, really reaching out to ex-Muslims. She's got a website, well organized, very good. Ah, Supreme Court verdict. Oh, it's a Supreme Court, yeah, verdict. Opinion becomes a verdict. On Zulfiqar Ali Bhutto case, big breaking, Sama TV. तो फुल मैं देख रही हूँ सनम जी का मैडम, सॉरी वो मैं अगर ऐसे सनम with respect and lots of love. So you know we had to like later on ask hard questions. Got entangled. Didn't know अब right क्या है wrong क्या है. couldn't make out. और मेरी तो तबीयत और भी ख़राब हो गई. तो एक दफ़ा मुझे जो करंट्स दे रहे थे ना, इट वाज एक्सक्रूशिएटिंग पेन. और वो एक it was such a creepy dream as I sleep, but you know, like I'm awake and I'm in my room, and I was in my room in Karachi. A window here on the neighbor side. There's some people there sending me bad energy, excruciating pain. बार-बार मुझे इतना and you know tossing or can't move, and I want to move the other side. I can't move. It's not tossing and turning, but like getting up. तो एक दफ़ा मैंने देखा कि it has something to do with, I'm not sure, Shahnawaz Bhutto का, like the killing of Shahnawaz Bhutto. Poison कहते हैं दिया था Shahnawaz Bhutto. Such a great, it's like it's not even an interview, it's like a talk with Sanam Bhutto ji. She's a beautiful, wonderful lady. तो इनका भी सुने और फिर देखें कि फादर इनका कैसे, व्हाट काइंड ऑफ फादर. और फिर मुझे औरों का भी सुनना है, तो कसूरी का भी सुनना था. शुक्र है वीडियोस मिल गए, चैनल देखना था. इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन आई वेंट थ्रू ऑल दीज वीडियोस. Supreme Court against, like when they, not against, but when they called Kasuri in the witness box. George Galloway, I despise the Prime Minister.
ये चैनल है स्काई न्यूज़। ये पता नहीं क्या है। ब्रेकिंग न्यूज़, जिम जॉर्डन discusses threats to freedom from the mob with Jordan Peterson. Forbes breaking news. Forbes breaking news channel on YouTube. Sorry, my voice is cracking, and it, sometimes it just leaves. If it's not smooth, the normal, it's not normal. So if it cracks or something, सूर्य के तो मैंने तो एक बहुत essential, most important point था कि 3 years थे ना भुट्टो अभी तक, like after killing, after let's say his father was killed, Kasuri's father, so 3 years passed, Prime Minister Bhutto was there. 3 years. 3 years, man. Right? That's why he said Kasuri, I think that I'm not too sure about that. That's why he couldn't, bring the FIR. वो क्या कहते हैं उर्दू में, report, file a report against Zulfiqar Ali Bhutto. तो ये yeah, Kasuri had he could have had guards or something, right? When he realized that Bhutto was against him, he could have left the country or something. Maybe if he didn't want to leave the country because he was patriotic, faithful to the country. Patriotic, very faithful to the country, doesn't want to leave the country. नहीं कुछ तो हो सकता था अगर, like he doesn't trust Bhutto. Bhutto would have him killed. Fitna, Iftikhar, called Iftikhar Ahmed. Who's Iftikhar Ahmed? Fitna. Chief Justice Isa got angry. Yeah. When देखा है, like, but I didn't see Chief Justice Isa getting angry. What led to Bhutto's execution? What was the charge? Interesting facts. तो लगता है कि seems like Kasuri had a hand in his father's killing. He didn't really take proper steps. I don't think it was Bhutto's fault in this. And shouldn't they put like maybe Kasuri is the one who used Bhutto's secret service? उनको bribe देके, जैसा ज़ियालत ने bribe लिया है, आप सुने ये? सुनने का है, देखने का है, सुनने का है, देखने का है. Your ears will not. I mean, of course, we were told this, that they are puppets of. The army has been sold to United States of America. We were told this in Pakistan. अब सुन भी लें, इधर YouTube पे पब्लिक है बेचारा, ये तो इन्होंने अपनी जान, ये इनके पेरेंट्स, आप, ये तो हमारा मिरेकल हीरो है. ऐसे ही पाकिस्तान सेव हो सकता है कि हम अवेयरनेस स्प्रेड करें, सच्ची बात बोलें और अनबायस्ड. और ये इतना इमोशनल भी नहीं, इतना इमोशनली नहीं होता, ये आपको अनबायस्ड शाउटिंग लाइक मी, स्क्रीमिंग नहीं होगा, इमोशनल नहीं होगा, कुछ ऐसा
मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है. So when very great question, I must say, that why didn't Zulfiqar Ali Bhutto in Secret Service और जो फैमिली वो वेडिंग से आ रहे हैं रात को फैमिली के साथ, so missing the son got the father, I mean getting the father, right? One bullet. छली कर देना चाहिए, पूरी कार को खत्म करना चाहिए था. एविडेंस नहीं बचे. अच्छा नहीं, इनकी माँ और इनकी बहन भुट्टो वो नहीं इतना बेवकूफ तो नहीं था कि फिर रखेगा अपना कोई कि ये एफआईआर काटे और एफआईआर काटने से पहले इसको उड़ा देता कसूरी को. आप लोग किस उसमें अभी ये लाइव ये इधर दिखा रहे हैं ना, हमें तो पहले इससे सुन रहे हैं उससे सुन रहे हैं, अभी कसूरी का विटनेस सामने दिखा रहे हैं. ये गद्दार हैं. मैं होती भुट्टो अगर मुझे मारना होता इसको, मैं तो इसको रखती नहीं जिंदा आफ्टर गेटिंग हिज फादर. ओ गलती हो गई. Go and get the whole family then. और बिल्कुल एविडेंस को खत्म कर दो कि वो एफआईआर ही नहीं काटे कटवा सके. Please, Bhutto was such a mind, such a brain, intelligent के अरब्स जब वो उनको जेल में डाला था ना, तो अरब्स ने मिलके लाइक अरब लीग आई थिंक कहा पाकिस्तान में अथॉरिटीज को कि इनको प्लीज इनको भेज दो हमारे पास. ये क्या ब्रेन है. मे बी अराफत यासिर अराफत PLO ऑल दीज अरब्स मिलके कहा, या यू नो इनके दोस्त थे अरेबिया में. तो ऐसा ब्रेन वो छोड़ देगा कि ये अहमद रजा खान कसूरी को छोड़ देगा. और ऐसी इनकी सिक्योरिटी, सीक्रेट सिक्योरिटी सर्विस, कि ऐसा मिस्टेक करेगी. और फिर इतने दिन गुजर जाएंगे, सालों साल, 3 साल के बाद, जब तक प्राइम मिनिस्टर भुट्टो था, और वो कुछ नहीं करेगा. और कह रहे हाँ मुझ पे इधर भी अटेम्प्ट हुआ था, इधर ये बेचारा मिराकुलसली ही यूज्ड टू गेट सेव्ड, लेकिन उनके फादर का सेव नहीं हुआ. व्हाट अ मिरेकल और व्हाट अ ट्रेजेडी. His father was 72 years old then. ये ब्रेन शहीद भुट्टो जो ब्रेन था, यू नो, नॉट ओनली फॉर फ्रेंडशिप, out of friendship, the Arabs, I heard, वो बड़े बड़े big Arabs, high level boss ने कहा कि इनको नहीं मारो, ये आप such a brain he is, such a brain. अब देखिए एक वीडियो जैसे मुझे मिला कि हमें हमारे पास भेज दो, send him to me, us, send Zulfiqar Bhutto to us, Shaheed. अरे शर्म नहीं आई इनको, कसूरी को. मुझ पे आ जाएगा केस, मुझ पे क्या आएगा केस. अब
ओह माय गॉड, मैं क्या डरूं? नहीं नहीं, हम तो उसी दिन मर गए थे जब मार्शल लॉ स्टार्ट हुआ था, जब भुट्टो को हैंग किया था। 11 years old. I'm stuck on this now. कैसे बाप को like okay they killed, but could it be? It seemed like didn't seem like the thing falling into place. And shouldn't this also be that there should be a case of who killed Kasuri Senior? Hmm? क्यों सुप्रीम कोर्ट, खैर अब तो ये वर्डिक्ट दिया, लेकिन क्यों क्यों जुडिशरी पाकिस्तान की वो नहीं करती है ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन? हाँ, डीप इन्वेस्टिगेशन किसने मारा? अब जो जिन्होंने मारा है वो जिंदा भी हैं या नहीं है, लेकिन थोड़ा try to go deeper into this, dig deep, get us who killed, क्यों नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता अब तो सुनने के जुल्फिकार, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो killed senior, got wanted to kill Kasuri, but got his father, got the senior Kasuri. Why aren't they digging deep into this matter? तो कह सकें कि जुल्फिकार अली भुट्टो was innocent, not guilty. I feel the courts are not that competent, unfortunately. इतने साल लग गए. Huh? It's a lapse of justice also, not only a murder of the judiciary when they hanged and the way they did the trials and all of Zulfiqar Ali Bhutto Shaheed. It's a lapse of justice. It's a crime. तो कोर्ट के अगेंस्ट कोई केस, अच्छा वो भुट्टो वाले तो नहीं करेंगे, पीपीपी भुट्टो वाले? ट्रेटर को अपनी जगह पे रखो, राइट? Did Zulfiqar, are you telling me that Zulfiqar Ali Bhutto got wanted to get Ahmad Raza? ये तो हम I didn't know the whole case. ये तो अभी पता चला है कि actually and by mistake, what a mistake, they got the senior Kasuri, father of Ahmad Raza Khan Kasuri. 44 years where we've been having traitors rule Pakistan. जुडिशरी का बेड़ा गर्क कर दिया. ऐसा क्रिमिनलाइज किया जुडिशरी को, ऐसे हाथ उनके काट दिए और खाते हैं पीते हैं. मर नहीं जाते तुम लोग? मर जाना चाहिए था तुम लोगों को. गद्दार. शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती? खुदा का ना खौफ है ना कुछ है. अरे खुदा का क्या खौफ होगा? इस्लाम 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 करते हो तुम लोग. हिपोक्रेट्स ऑफ हाई ट्रीजन तुम लोगों ने किया है पीपल ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट. यूनाइटेड नेशंस तो कुछ करेगा, वो तो अमेरिका वाज इन्वॉल्व. अब हमारे पास कौन सा इंटरनेशनल जस्टिस है, कौन सा कोर्ट है ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जहाँ ये ट्रायल चलना चाहिए?
against the people of Pakistan. ये लोग Ahmad Raza Khan Kasuri, the judiciary of that time who hanged Bhutto, the army, generals, Ziaul Haq against, and all the lawyers and the judges involved should be held accountable on high treason. इन्होंने इन्होंने पूरा करप्ट कर लिया. मर्डर ऑफ द जुडिशरी क्या होता है? पाकिस्तानी कह रहे हैं it was a murder of the judiciary. इतना स्लो है जस्टिस देने में हमें. 44 years. एक मिस्टेक तो आपने करेक्ट कर ली. दैट्स अ गुड स्टेप, ग्रेट स्टेप. 44 after 44 years, much appreciated. But how long? I think that his son himself was involved in the murder. तो अभी जब हमें, पहले तो ऐसे नहीं होता था ना, छुप छुपा के पता नहीं क्या केज में लाया है. कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो को ह्यूमिलिएट है, कहते हैं कि प्रोटेक्शन के लिए लाया है केज में. जो भी उस टाइम पे और फिर बाद में भी, पाकिस्तान is a joke now. Wicked, very wicked joke. So, I just don't have the articulation, don't have the eloquence to express myself. देख इतने, तभी तो इतना मैं कहती थी इतने अनग्रेटफुल तुम लोग पाकिस्तानी. मार्केट्स में जाओ, सर्वेंट्स को कहो, यू आर सो अनग्रेटफुल, सो अनग्रेटफुल. पर not because I'm a rich kid. No. पता है my grandparents used to live in Ghadars. There was no demarcation. Bhutto, when I had a life crisis, that there was a started happening. When for the books, I went to Urdu Bazaar. Like, what kind of textbook? What is this? A Karachi American School textbooks. Such quality, high quality. But when I used to go to Imam Hussein's majlises, it wasn't like, what is this? In Karadar. कैसे? I mean, तो ये murder, traitors, पूरी पाकिस्तान को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया दीमक की तरह. बहुत फास्ट दीमक आई. ये ट्रेटर्स कितने पैसे खाए, एक्सेप्ट किया ब्राइब. हाँ, पहले बोला पीनट्स हैं यूएसए. आई कांट टेक दिस इज पीनट्स फॉर मी. जुल्फिकार अली, ओ सॉरी, जियाउल हक ने कहा अमेरिका को, दिस इज पीनट्स फॉर मी, द थिंग योर ब्राइब यू गिविंग मी. फिर वो रोस्टेड पिग आया. Pig meat is not, roasted pig. बड़े बड़े बिग रोस्टेड पिग्स हैं, बहुत बोर्ड्स, क्या कहेंगे, कैसी हालत कर दी. झूठ सच क्या है पाकिस्तान में पता, झूठ चलता है. मुझे एक लॉयर्स ऑफिस में किसी ने कहा इधर झूठ भागता है. So if you want to speak the truth, go back to where you came from. I go back to London maybe, where I had just come from.
UK. So, yeah, this, oh my god. Sorry if I've gotten emotional and नहीं जुल्फिकार अली भुट्टो को जैसे ह्यूमिलिएट किया, जैसे जेल में भी रखा, और ये सब इसकी वजह से, सब इसकी वजह से। एक ये एक अहमद रजा खान कसूरी, और आप इस पे रहम खाएंगे, इसके फादर का मर्डर हुआ है, इसने ही किया है। ओ माय, ओ नो, मी नॉट, ओ नो, मैं थोड़ा इमोशनल। डैडी कहता है कि, कहता था कि भुट्टो इमोशनल था ना, और तुम भी इमोशनल हो, you will be loser, you will lose. I thought maybe I'll be assassinated one day. I used to think, uh, at very young age, 11, 12, like that, I used to think that I'll be assassinated one day. Dad ने सही, maybe मेरे बारे में तो सही कहा है। तो उनको आप क्या, कैसे लोग हैं? What kind of people are you? हाँ, आपके गवर्नेंस तो नहीं है कुछ पाकिस्तान में भी? बहुत, हाँ, एक पाकिस्तानी भी आता है, कोवर्ट नार्सिज्म उनका, कहते हैं मेरी माँ, ऑल दिस फादर, एवरी वन ऑफ देम कोवर्ट नार्सिस। आप देखें केस को, कसूरी को ज़्यादा वो करें, देखें रहम, अब आप गलत इंसान पे कर रहे हैं। क्यों? मैं तो फेसबुक पे अपील against the President of Pakistan, appeal to law, no, no, appeal to President of Pakistan, appeal to the Law Commission of Pakistan and the President of Pakistan, पेज ग्रुप्स बनाए हैं, उधर ही मैं शेयर करती हूँ ये साइड, लगता है साइड लाइन, बिकॉज मेरा भी केस मुझे आज तक पता नहीं चला है, और ये ट्रेटर्स पाकिस्तान के, ये देखें, ये औरत थी, ये इसके पास सियाल हक आए थे एक जमाने में, हैं मिर्ची डालने हमारे जख्मों पे आए थे, राइट? ये इतनी झूठी मक्कार औरत थी, झूठी मक्कार। ये कश्मीरी पंजाबन। अच्छा, हमें कहा है कि द मिडिल नेम, यू नो, शी यूज्ड टू हैव ऑन हर टेबल like this, right? Plate with her name, Dr. Farooq Z. Ahmed. ये नहीं था, ये नहीं था। ये इतने मक्कार, अनग्रेटफुल हैं ये पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी, हम तो अब एक्स पाकिस्तानी हो गए। गद्दार की, यानी गद्दारी की पूरी मिलिट्री जियालक के साथ, जियालक के पीपल विद नवाज शरीफ इवन गद्दार। अब वो प्राइम मिनिस्टर शायद बनने वाला है। प्लीज डोंट वोट फॉर हिम, vote for the right people, which are I don't think Bilal Bhutto should be. I don't even think that I shouldn't. My heart goes out to the Bhutto family. Our hearts cried and then they finished. So I don't know if I have a heart at times. I think it blew up or something. It's gone. Still, I'm doing this. Maybe one part. There's something like it's burnt, but the root, जैसे वो A Walk in the Clouds movie है ना,
आग लग जाती है उनके फार्म पे, फायर consumes all the whole plantation and all उनके plantations, but something left still, something still left over. सांस भी से नहीं ले सक रहे, अब तो एंड दिन आ गए हैं, एंड टाइम्स मेरे लिए, फॉर मी, मुझे लगता है किस दिन ड्यूरिंग स्लीप आई डाई बिकॉज सांसें सही नहीं आ रही, राइट। तो वो मेरे पास अब तो मैंने वो चाइनीज़ जब प्रोटेक्शन गुड लक चार्म मुझे मिल गया, लॉकेट एंड सम चाइनीज़ मंत्रास एंड, तो अब तो मुझे लगता है कि मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना को ये जो टीबी का वो बीमारी हुई थी ना, कहते हैं उनकी भी डेथ, so let's leave this disgusting. It's Zahur, see Zahur, not Zahdi. She told me she's a Sayyid, and her mid. हमने कभी पूछा नहीं, you know. हमने कभी query like a doctor. I could have said, oh, but doctor man, कि देखिए कितने उसमें हम हो गए, like दूसरे को trust करना. But I knew that when she used to give sarin as right for me on prescription, she wasn't qualified to do that. She's a psychologist, not a psychiatrist. And a student or someone was telling me that she's not qualified to prescribe drugs so that you can get it from the chemist in Karachi. It's illegal. हम पूछते नहीं थे, हमने नहीं पूछा। ये देखें इधर फेसबुक पे भी ना ऐसे लिखा है, फरोसी अहमद, सिर्फ एक जगह पे इधर fca.com.pk। ये उधर भी जाती थी, शिफा हॉस्पिटल, आर्मी का। ये ट्रेटर, ये ऐसे झूठ बोलते हैं। और ये क्या पहनती थी पता है, साड़ीज विद स्लीवलेस, जब इसके ऑफिस में जाते थे ना, ब्लाउज साड़ी, ये तो इंडिया का ड्रेस है, शलवार कमीज, और आती थी कभी कभी रात को लाइक वो नाइट ड्रेस में लंबा, राइट। मैंने तो कभी इनको शलवार कमीज नहीं, मुझे याद नहीं आया खान शलवार कमीज पहनते नहीं देखा। कश्मीरी पंजाबन को, sorry to put it this way, why should I respect these people, these liars? हाँ, कुरान में भी लिखा है, और यूनिवर्सल वर्च्यू नहीं है। आई मीन यूनिवर्सल वर्च्यू तो ये यूनिवर्सली ना, इट्स ऑल कल्चर्स से दैट honesty is the best policy, like the Britishers have put it, right? And lying is bad. Even secular system, atheists ka, even atheists, you know, why did Bertrand Russell leave Christianity? Because he thought it's a lie, false religion. Even atheists, they have this thing for truth. And most of these Muslims, so-called, don't have. Any kind of integrity, disgraceful traitors. अब कहाँ जा रहे थे? Forgot. So anyways, let's go here. हाँ, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, एक मैंने वीडियो देखा उस पर, बस ये, और हकीम सैयद का भी आया detailed. I can't get enough of this lady. I mean,
this talk with her, close and personal, was so, मुझे ना वो पुराने ज़माने के जो हमारे पाकिस्तानी, और मुझे अपनी खोजा सिंधी, और मेरी माँ, माय मदर, माय आंट, पुराने ज़माने के टाइम पे जब प्रॉब्लम्स नहीं आए थे, नया दौर टीवी, thank you for this. I am so appreciative of this talk with Sanam ji, Sanam Bhutto ji, madam. And Pakistan, where is it? शाहिद, अच्छा इनका मैंने थोड़ा सुना और स्टॉप, देखें किधर स्टॉप कर दिया. Red line. You see the red line here? The actual case on Zulfiqar Ali Bhutto's death penalty. TCM. Hmm. I think he seems like a very negligent person, actually. And when the he could have, when the bullets were coming, not only, you don't go down driving just for yourself. You say, go down. You see, it's not like I'm going in the car and my friend, we're going, and my friend has to meet, someone she likes, and I'm like, log dekh rahe hain, and I go down. No, no. So I went, would go down in the car. I don't want to show my face while driving. No, it's not like that. Bullets are coming. He managed to save himself and go down. वो क्या बोलते हैं, bombardment है? When you go down, what's the word for it? It's not coming now. इधर इतने अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, पैसे भी हैं, थोड़ा ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उठ नहीं सकते अल्लाह इतना, बिकॉज कुछ मंगाएं. But no, I'm here and time is ticking since morning, half stomach and smoking, because see, I can't afford to keep my stomach empty. I'll get terrible acidic, नहीं क्या होगा उसमें, मुझे तो I'm in torture already. क्या क्या है, इतना हमारे मुल्क, हमारी हमारे गांव ने हमें दिया है. In Sindhi, I think they say Gam rather than Mulk. Junejo used to say Mulk, right? A lot. तो एक है कि एक वीडियो मुझे इधर नहीं मिल रहा है. Muhammad Ali Jinnah. All these, they say it's a murder. हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना का एम्बुलेंस जो नहीं आया ना, was definitely, yeah, so they put it, was Zulfiqar Ali Bhutto killed before hanging? Was he the victim of a foreign conspiracy? Or जो Ghadar हैं. You see, if you don't bribe, नहीं लो. तो सैयद मुजम्मिल ने दिखाया ना कि जियालक ने ब्राइब लिया ना, आखिर आखिर जो हमें बताया था पाकिस्तान में, it was true. He was sold. He sold the whole army. He sold himself and the army to the USA. जो आपके मुल्क का कभी बका नहीं चाहते थे, आपको यूज किया और यूज किया. और जो गद्दार हैं, अपने आप को मार खत्म कर दो, लेकिन just say no, just say no. Coward. I can't find that video. What led Bhutto's execution? कभी कभी ऐसे murder cases unresolved in Pakistan. First,
लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब इनका। हाँ, और इतनी like how come that when I was reading Mr. Jinnah's case on Wikipedia, I was like, what's this? हाँ, ये देखिए आप, ये क्यों ऐसे? Ugh, I I can't stand traitors. Sick, sick. सलाम उनके माँ बाप के ऊपर जो अपने बच्चों को सिखाया है कि अपने मुल्क के साथ कभी गद्दारी नहीं करना, ना किसी के साथ करना। जिसने सिखाया है कि अपने दोस्त के साथ भी गद्दारी नहीं करना। मुल्क क्या होता है? What is the mulk? Right? What is the country? Not even betray your friend. सलाम उस ग्रैंड आंट पे जो कहती थी कभी किसी को, आई यूज्ड टू ओवरहियर कि फातिमा, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। We have to one day stand in front of God. अब तो आप लोग झूठ ही झूठ बोलते हैं, आपको शर्म तक नहीं आती है। और हम तो वंडर करते रहे कि ये क्या, फिर तो ऐसा कंफ्यूज कर दिया हमें जब एक पारसी का सुना कि भुट्टो साहब ने, शहीद भुट्टो ने उनके फादर के को सोडमाइज किया। फिर मैंने रिसेंटली भुट्टो का पीपीपी छोड़ दिया। तो ये है फादर ऑफ द। अच्छा, ये जो इधर बैरिस्टर, मेरे फादर कहते थे, यू नो, मेरा फादर मुझे एक स्टोरी बताते थे मिस्टर जिन्ना की, कि he was in the plane once smoking, huh? And the lady next to him, who was sitting next to him, would say, oh, they were talking, and she said, I'm going to bring a case. I'm going to call out to these people and say that you molested me, you've assaulted me in the plane, right? And Qaeda was very calm, listening to the lady and having his puffs, right? Like I am. और उस औरत ने कहा कि मैं कंप्लेन आई एम गोइंग टू कंप्लेन दैट यू हैव असॉल्टेड मी हियर, एंड ही hadn't assaulted her. He said, okay. She called the stewardess and all. She said, you know, this man sitting next to me in the plane has assaulted me. तो देखा, अच्छा, इतनी देर से, जितनी देर वो औरत बोल रही थी और फिर कंप्लेन किया, Muhammad Ali Jinnah Mr. Muhammad Ali Jinnah was smoking. तो फिर ना उसने स्टूवर्डेस को, या जिसको भी कंप्लेन किया, वो प्लेन में स्टूवर्डेस ही होगी, तो उसको सिगरेट दिखाई ना, ऐश पूरा, लाइक वो था राइट, इधर सिगरेट का हाफ नहीं था, पूरा बना हुआ था, as long as the cigarette and like a little bit less, like पूरा सिगरेट को पी लिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेकिन ऐश गिरा नहीं कहीं भी. Ash was like, you know, so the whole cigarette, it was there on the cigarette. तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, अगर मैं इतना वक्त पहले, I have been smoking, look at my cigarette, the ash is like there on the cigarette, the whole cigarette he smoked, and the ash
is there on the cigarette. So if I had been like assaulting her, the ash would have fallen from the cigarette. फिर स्टुअर्डेस जिसको भी कंप्लेन किया ना इन द प्लेन स्टुअर्डेस या वो ऑफिसर क्या वो they left him. They said, yes, you're right, you're innocent, and she's the guilty one. Ash was intact. इतनी बड़ी ऐश बन गई थी और सिगरेट बिल्कुल कम हो गई थी तो उस लेडी ने कहा कि a while ago he's assaulted me. This is what she must have said, right? That just a few minutes ago. And Mr. Jinnah showed his cigarette that he was smoking. And he said, it was still lit up. And he said, look at my cigarette. The ash is intact. Itna pura ban gaya tha on the cigarette. What a bad. He was a great mind himself. He could fight his own cases. अब ये डॉक्टर फरुखी अहमद बता रहे ये शो मार रही है कि एक के ब्रोई तो थे मेरे केस पे but I fought my own case from Stanford University. I did PhD in 6 months and all this when यहाँ पता नहीं 6 months 4 years yeah 3 years 2 years का PhD MA in Stanford University. I did it in 3.5 it's 4 years or something like that. I can't remember what like I did it less than what it was like you have to do it for 4 years so you have to do it or either so I can't speak properly really this is such an impediment for my case. Illness. He worked in a frenzy. मेरा भी यही हालत है इधर फ्रेंजी में हूँ stretcher in so starting Quetta on 13th August, the eve of Independence Day, for which a ghost written statement for him released. Despite an increase in appetite, he then read law. It was clear to his doctors that if he would return to Karachi in life, he would have to do so very soon. By 9 September, Jinnah also developed pneumonia. Doctors urged him to return to Karachi. It's like murdering him now, where he could receive better care. And with his agreement, he was flown there on the morning of 11th September. Dr. Ilahi Bucks, his personal physician, believed that Jinnah's change of mind was caused by foreknowledge of death. The plane landed at Karachi that afternoon to be met by Jinnah's limousine and an ambulance into which Jinnah's stretcher was placed. The ambulance broke down on the road into town, and the Governor General and those with him waited for another to arrive. He could not be placed in the car as he could not sit up. They waited by the roadside in oppressive heat. As trucks have मुझे तो मर्डर केस लग रहा है negligence murder but couldn't it go on negligence अल्लाह कोई मिस्टर जिन्ना को मारना चाह रहा था that's why the ambulance broke down. Shouldn't you have another ambulance handy? But there were no, of course, no dreaming, no thinking, no dreaming of mobile phones. Ambulance broke down. Who killed Mr. Jinnah?
और एक तो जज ने ना इस पे कसूरी को he caught Kasuri, the Chief Justice of the Supreme Court, when Kasuri says that fitna, Iftikhar Ahmed is fitna, and having such a position, and उनके भाई भी पता है army, one brother was in the army, Kasuri's one brother. He said, if something happens to Iftikhar Ahmed, then you will be the suspect, right? In fact, yeah, we can say that you got him killed. God forbid, if something, God forbid, you say, जी क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं देता. Can't hear? लेकिन चले वो, लेकिन नहीं, ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है. इफ्तिखार अहमद फितना, if something happens to Iftikhar Ahmed, but you just see the reaction of this Ahmed Raza Khan Kasuri. No. आप पॉइंट पे तो आए, पॉइंट पे आए. इधर उधर dilly dallying. You don't want to. It's very simple questions. Chief Justice of Supreme Court asked Kasuri, since you've said that Iftikhar Ahmed is fitna, God forbid something happens. I mean, I in this condition could get it. Why can't Ahmed Raza Khan Kasuri get it in one go? हाँ, दूसरी दफा रिपीट करे, तीसरी दफा रिपीट करे, कितनी दफा रिपीट करे? God forbid if something happened to Iftikhar Ahmed, people will, we can say that you killed him or you got him killed, right? जो भुट्टो के अगेंस्ट ये बोल रहा है कि मेरे अगेंस्ट चली गया था, आई वॉज वेरी क्लोज टू भुट्टो एंड दिस एंड दैट. एट दैट टाइम जब भी, so for that, since you have said Iftikhar Ahmed is fitna, God forbid something happens, of course, right? Why? So look at his reaction, Ahmed Raza Khan Kasuri's reaction. In the first go, he can't get what the judge is saying to him. Very simple. कितनी देर हो गई? 44 years. इनको इनकी सजाएं मिलनी चाहिए जो इन्होंने भुट्टो पे डाली हैं ना. कोरे तो इनको मिलने चाहिए थे और जियाउल्लाह को तो सबसे बहुत ज्यादा कोरे मिलने चाहिए थे. What they did, how torture and cruelty, and पूरे पाकिस्तान को पता है खत्म कर दिया है. तो अब कितनी बार हम कहेंगे सॉरी, आई एम अ fond old man, not enough. Pray do not mock me. नहीं, you see, इतने साल गुजर गए और क्या क्या नहीं हुआ है. पाकिस्तान बर्बादी में चले गया. रेप विक्टिम्स बेचारे कितनी जेल में चली गई. Ordinance, hudud. According to the hudud ordinance, they don't have witnesses, they go to jail. They get punished. आपको क्या पड़ी है? What kind of people are they?
और अब आप नवाज शरीफ को वोट करेंगे. I wish Bilawal Bhutto didn't have to do this, but please vote for Bilawal Bhutto. He's too young. He should go and enjoy his life. Pakistan has hanged itself by hanging Zulfiqar Ali Bhutto. It has hanged the true trials in honesty. It has hanged itself and finished. खत्म शुरू हो गया पाकिस्तान. कैसे कैसे मक्कार मैंने देखे. क्या कॉन्फिडेंस था. You know, my aunt was married. चले वो तो थोड़ा गलत था कि लेकिन कितना कॉन्फिडेंस दिया था भुट्टो ने. You could work as a stewardess. क्या हमें कॉन्फिडेंस दिया था भुट्टो ने, शहीद भुट्टो ने, to the women, to not only to his female, his daughters, but to every daughter of Pakistan, to every sister, mother of Pakistan. वो कॉन्फिडेंस चले गया, खत्म, broken to pieces. क्रिश्चियंस कितने उसमें होते थे, पता है क्या क्या स्कूल्स बनाए, ये क्या जुल्फिकार अली शहीद ने नेशनलाइज किया. लेकिन Christians would not leave Pakistan even when he nationalized their schools and colleges. There were still great Christians there working. ये आज़ादी, ये कॉन्फिडेंस, ये प्रोग्रेस, अब तो कोई क्रिश्चियन भी नहीं चाहता होगा पाकिस्तान में माइनॉरिटी. अब पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा है, बस एक हीरो. लेकिन एक जैसे एक इस पूरा पूरा जल गया हमारा पाकिस्तान. वी लॉस्ट इट सीम forever, and it is 44 years is a long time. तो कितने लोग बस a walk in the clouds. जैसे मैंने कहा ना कि मेरा दिल तो पता नहीं कैसे, तो अभी मैं अपने आप को समझा रही हूँ. I'm trying to make myself understand. A walk in the clouds. When the plantation, my stomach, sorry, is making these sounds if you can hear. Khana, plantation, sandwich बनाऊंगी मैं. Movie का movie. Why isn't it? Oh God, I'm used to it this way. Oh. So, if I can find it, you know, the root was fire. Similar.
Oh God, I'm very tired. Actually searching for something, बस एक दफ़ा नहीं मिलता है. Sorry, I'm not feeling well, so मुझे बहुत घबराहट, restlessness होने लगती है. Can't. So this, and also because I'm live stream, uh, I can't go fast now. What was the quote? Can't remember. I can't remember. What was left? You know, the root, a bit of that root was left. Oh God. Let's go to I am. Oh, see. They have faith in you, but your eyes open. What do the doctors know about the needs of a man's soul? Oh, now it's not here. So there's a root. A थोड़ा बचा है ना. It didn't get burned. तो क्या होता है यानी? Let's see. No copyright, so I have to go to website. I believe that there's a perfect someone. Not sure. The no copyrights infringement. Infringement intended. Oh my God! Oh, what a life. तो ये life है ना? I think we should be prepared for all tragedies. जिंदगी में traitors भरे हुए हैं. Treason, treachery. पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया. I have a nervous breakdown. So I'll be saying this, repeating कि पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया. तो अब कितना टाइम हुआ है पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया. इन ट्रेटर्स ने जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा अभी तक लीडर नहीं मिला है पाकिस्तान को. हमें निकल. Right. No, I don't want to. शायद वो रूट लेफ्ट है. जैसे अभी what we needed in Pakistan was to raise awareness कि हमारे क्रिटिकल थिंकिंग का अगर आप सैयद मुजम्मिल का वीडियो देखें ना तो आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है अपनी गलतियां मानना, क्रिटिकली इवेल्युएट हर चीज़ को करना और फिर क्या करना कि ये मैंने थोड़े ऐसे I wasn't feeling well about this, but this was I was so overwhelmed, perhaps recognition of problem, identifying where we have the problem and how to then we can take an this is the first step. So evaluate वो नीशे का दे रहा था सैयद मजामन. Legal construction of beliefs, values, draw conclusions. So we can draw conclusions, evaluate, recognition. Second one I couldn't get, sorry. So this is very important कि हम अपने प्रॉब्लम्स रिकग्नाइज करें. अपना तो इलाज हो सके ना. वो क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सोल्यूशन मिले. तो एक बुक भी मैंने पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था कि प्रॉब्लम फाइंड आउट, ask yourself what is the problem. वो थोड़ी spiritual, वो on the spiritual side the book. Nietzsche philosopher like that नहीं था, वो थोड़ा spiritual था. So it said like identify, see, find the problem and then put to yourself a question. What is the solution to this problem? कुछ कहते हैं don't go for the solution or you नहीं. But this book was saying, no, ask yourself what is the solution to this problem. Find various other options. आ रहे
It could be this, it could be this, it could be this, it could be this. Write it down. And then narrow it down by seeing, good, can it fit your what solution? Can this one be? Write down all the solutions you have that come to your mind, or maybe your heart. So then narrow it down. Trust in yourself. Maybe you can find the problem and the solution to your problem without asking anyone else. But, like for example, relationship. What is my problem with Mrs. Munira Gulzar? Right? Sometimes she doesn't see me and all this. So, like I was in London. I don't know, I can't remember which book I read it in. So, what is the problem? That, oh yeah, she's the, oh, well, attachment, I'm missing her. Okay, the missing is the problem. Otherwise, when I used to go to her, there was not much of a problem, not really. We used to meet. She was nice with me. She would see me off. She seemed welcoming. कहते हैं जियोलॉग का एक ट्रेट एक बहुत डिसेप्ट इतना हरामी था जियोलॉग सॉरी वर्ड ऐसे आ रहे हैं I don't mean ooh this now you're going to tell me why am I disrespecting at least I didn't break the law or put someone at least I don't take bribes. So wouldn't you just overlook my disrespect for General Sia, the Jol Khana? The वो क्या मैं बोल रही थी अभी मैं भूल गई अल्लाह आपको नेकी दे मेरी माँ कहती थी अल्लाह आपको नेकी नहीं नहीं नेकी आई एम आई हैव अबंडेंस अच्छा तो वो एक बरसात वो पुरानी मूवी इंडियन मूवी में दोस्त वो फ्लर्ट है ना वो लड़कियों के पीछे जा रहा है एक को छोड़ता है दूसरा तो राज कपूर उनका दोस्त होता है प्रेम जी कौन नाम है उनका तो बरसात की रात में स्टार्ट के राज कपूर से कहता है कि वो शायद शरीफ ज़ादी होगी तो कहते हैं शरीफ और उनका दोस्त कहता है कि वो शरीफ कौन है डिसेंट कौन है इनडिसेंट कौन है ये तो वेस्ट बैरूनी मुल्क में दूसरे कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है और हमारी कंट्री में क्यों ऐसा होता है कि हम गर्लफ्रेंड रख सकते हैं 3 रखें 4 रखें 5 रखें व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दैट बुरा अच्छा बुरा ये बहुत है हमारी country in our country India because it's an Indian movie old black and white तो राज कपूर थोड़ा ब्रेक वो गाड़ी को ठीक विक कर रहे होते हैं अपनी जो ब्रेक डाउन होती है उनकी कार तो थोड़ा वो पॉज लेता है और फिर टर्न अराउंड करता है कहता है किसी का दिल नहीं दुखा अच्छा ये वो लेकिन दिल एक मंदिर है या दिल एक खिलौना थोड़ी है किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं करनी चाहिए हमारे रिलीजन में तो ये था overall picture of my Shia Islam on the whole was that not even hurting the feeling of anyone किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए इस पे वो होना चाहिए डिसाइड ये नहीं है कि कॉन्शियस गुड मॉरल्स ये वो बस ये देखो कि किसी का दिल आप नहीं दुखाए ये हो सकता बड़ी गहरी बात की so compassion empathy first rather than morals man-made religiously made फिर वो रिलीजन में लाते हैं फिर पनिशमेंट फिर क्या
So do you think our moral, forget morals, what is right and wrong, when love is on our side? And when love is on your side and in your heart, I don't think you'll ever hurt people. Unless I go mad, which I have gone mad. Unless it's not really me. कभी आपका दिल नहीं चाहेगा तो फिर राइट एंड रॉन्ग कल्चरल रिलेटिविटीज में आ जाती हैं कि अरे ये कल्चर तो कहते हैं गर्लफ्रेंड्स रखो, have a nice beautiful, no, not beautiful, but have a nice uh, flirtatious day. I have 10 girlfriends. ये तो वेस्टर्न भी नहीं करते हैं वैसे, मैंने नहीं देखा, but there was a man who said I had some 100 girlfriends in this. वो एक रेयर केस होगा, बट यू नो कि मैं इसके साथ सोऊं, उसके साथ, राइट, and yeah, you then shouldn't mind. So you choose the girls that like also when they are at the same time, or okay, you have a girlfriend at the same time you have like simultaneously two girlfriends. So allow that other two girlfriends to have two boyfriends or three boyfriends or four boyfriends. Sleep around. म्यूचुअल, म्यूचुअल इक्वालिटी होनी चाहिए हर चीज में ना, फेयर एंड स्क्वायर. अब आप गांव में जा रहे हैं, गांव की लड़की बेचारी, उसको कहेंगे आप सिटी से आ रहे हैं, इंडिया से, इंडिया की सिटी, राइट, बिकॉज बरसात मूवी का है, एंड प्रोमिस्कुअस होना चाहते हैं आप, और वो क्या बोलते हैं, सेक्स, कैजुअल सेक्स करना चाहते हैं आप. देखिए ये कितना बुरा, राइट है या रॉन्ग है. So a little bit on human, like now that I've touched on this welfare and well-being and relationships. Casual sex, unhealthy or healthy? तो आप कैजुअल सेक्स उन लड़कियों के साथ, मर्द को थोड़ा वो होना चाहिए ना कि let the your girlfriend be a casual sex person lover, like she can also go and have a casual sex with another man, young man, or if you're young, if she's young, or anyone she likes. What we can all agree on is that casual or any sex carries the risks of unplanned pregnancy, sexually transmitted infections. अभी तो वो which verywellmind.com, चले कहते हैं कि कुछ वेबसाइट्स पे, लेकिन हम देखते हैं कौन से क्या biased हैं, क्या हैं. What is the truth about? Is it unhealthy or healthy? Depression. Casual sex can lead to decreased satisfaction and low self-worth, especially when not aligned with your personal preferences. Medical news. Evidence suggests, medicalnewstoday.com, evidence suggests that more frequent casual sex may correlate with higher risks. STIs. एक तो बहुत अच्छा किसी ने दिया था कि नो नो कोई इतना अनहेल्थी नहीं है, पॉजिटिव दिया था, पॉजिटिव. Is casual sex hazardous to your mental health? Casual sex gets a bad rep.
Let's see psychology today. And then you can go into the medical stuff. Casual sex gets a bad rap by what's it, Matt Huston. Although most young people have at least one hookup under their belts, many fear this is detrimental to their psychological well being. Scholars, health professionals, and the media alike have all expressed concerns that hooking up leads to depression, anxiety, or low self esteem. Many studies over the past decade have tried to answer this question, but the results have been very mixed. Very mixed. Now, a study published in the Archives of Sexual Behavior suggests that it's not so much whether you have casual sex that impacts your mental health. It's why you do it. It's why you do it. अच्छा, studies तो ये देखें different आ रहे हैं research and opinions through research. And look at the physical also. तो ये pros and cons हैं. It depends on your intention का ना. So this. So if you want to have casual sex, equality, like you should allow and not care even कि अगर जिसके साथ आपका casual sex है वो भी औरत female is good for fun and she's going for the other person casually sex. लेकिन उनके पास तो नहीं जाए ना villages में जाके और ये. So let's keep it to that, right? दिल नहीं दुखाएंगे. So be with your like-minded people. किसी जो doesn't believe in this, उनको target नहीं करें. Casual sex. Believes in commitment. उनको पहले पूछें, do you believe in commitment or casual sex? I believe in commitments, loyalty, one, faithful. So I wouldn't ever even dream of going for this. Until I'm in my right mind. So since my mind, like, बहुत सारे changes मुझ में आया, I'm not the same Zahara as I was before. And I've seen many, I've even gone through Robert Sapolsky's video, thingy, thingamaji, sorry. You know, that, no, let's not go to the history, but we don't have free will. And I could see like there's something, some force beyond my control that is driving me. That could be possession, and I feel something here under my skin also. The biology of our best and worst selves, Robert Sapolsky, being human, Robert Sapolsky, behave, the biology of humans at our best and worst. This is his book, if you want to buy it. Do we have free will? Daniel Dennett versus Robert Sapolsky. Yeah, so this, do we have free will? So I'm on that with Robert. I also wanted to study the brain and see, you know, whether, why we, what is all this? Like, why do we choose what we choose? Why do we do what we do when we don't want to do it? बार मैंने 1,000 times I told myself, God would send a miracle. Oh, go to the principal's house, call her. Or sometimes trying hard. Like one day, Eid on Eid night, not going there.
So I would allow her to spend her Eid day with her family. So I would go on the Eid night and deprive her family from her. So Eid night, one night I didn't go, and I'm writing in my diary, no flowers. नहीं नहीं एक दिन तो छोड़ दो ना प्रिंसिपल एक रात ईद की रात अपने to spend with her family rather than you didn't go. No flowers. अच्छा ये मैं लिखती रह रही हूँ. No flowers. Repeating. No flowers. No flowers. I don't know how many times I've written in my diary that night. No flowers. No flowers for Mummy, Mrs. Munira Gulzar. So what is all this? Temptations. Imam Ali says in Najil Balagha that you cannot punish the person who's like you can't qarar him guilty. Why? Why? Because temptation. If you are tempted by something, that's something. If you are tempted, oh, Imam Ali. Did I get this right? Neither remain with you forever, tempted to sin. Ah, yes, there is. Shia chat.net, I can't go because the website doesn't open. If you see, this is what I've had found in my Najil Balagh. The one I had, so it had this translation. The one who is tempted to sin does not deserve to be punished. What does this mean? I'm still trying to find out. You could be tempted by Satan. So on one hand, Imam Ali has put this. Now this, if you look at the Quran ayat, goes against Abhima. Oh no, I'm back with this terrible. It hurts me so much to go back into the ayats and Imam Ali sayings back to this religion, helping the Muslims leave Islam. So I will be coming. No, no, it's very late. Is it Thursday? Gosh, Saturday night. Oh, no, it's Friday night. Oh, some people. I hope I don't disturb my neighbors. I've been staying up at nights and, either coming here live stream or Facebook or listening to videos. So, but on the very, very low sound. I hope I haven't disturbed my neighbors until my sleeping patterns become normal. I do have this, I feel that I could be disturbing my neighbors the whole night, listening, watching videos, sometimes raising the sound and all this, okay? So I'll take a break. Yeah, I think we should, I should take a picture of this screenshot. I will come back on this. My neighbors will have to suffer if they even hear a whisper of me. The walls are thin, and we will now then later on see about this. Tempted to sin, a punishment. Yeah, what does Imam Ali mean? And unfortunately, ShiaChat.com doesn't open. The website doesn't open in my country. It's the problem I have. So yeah, I want to know. Next live stream on this. Thank you so much. I have to take a break.